Good morning everyone. This video goes on innate immunity 2. In this chapter we read cell and molecules of innate immunity. तो देखिबा first देखिबा which cells are involved in innate immunity. The natural killer cell, macrophages, neutrophils, dendritic cells, mast cells, basophils, eosinophils and platelets. Then देखिबा molecules of innate immunity. The molecules of innate immunity सब किए जीवो ना opsonins, complement proteins, natural antibodies, pentraxins, collectins, ficolins and lysozyme. तो then discuss करबा हम स्टूडेंट the cellular barriers व cells of innate immunity. The innate immunity involves the participation of diverse kind of cells. तो हमारे innate immunity बहुत सारा cells स्टूडेंट तमार जो immunity cells सब यूज होता है such as neutrophils और तक में कौन कही था macrophages, then आसीजिबो monocyte macrophages system cells, then natural killer cells, then आसीबो dendritic cells, basophils, eosinophils, mast cells, platelets and epithelial cells. तो epithelial cells हम previous class रे पढ़ी थिले जे physical barrier से केमती help करची जे skin through रे epithelial cells form physical barriers in skin, epidermis and mucosa. The rest cell types of express surface pattern recognition of receptors और ताको मैं कहबा capable of recognizing pathogen associated molecular patterns व palms and damage associated molecular patterns आउ जो सब rest cell रहिले. Clear? Then next जीवा तो ये पिक्चर रे देखो यदि हमें देखिबा हम इम्यूनिटी टू टाइप्स इनेट इम्यूनिटी एंड adaptive immunity. तो innate immunity कौन है स्टूडेंट तो रैपिड रेस्पॉन्स मतलब रेस्पॉन्सटा कौन है यदि वंस तुमर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आसिकिना बॉडी रे वंस एंटर करने को जाउची तो सी टाइम रे कौन हबो ना innate immunity फर्स्ट बैरियर पापरे काम करिवो. देन सेकेंड आसीबो किए तुमर adaptive immunity. तो ये जो innate immunity टा कौन है ता रेस्पॉन्सटा कौन है रैपिड माने बहुत जल्दी होता है बट adaptive immunity रे ता रेस्पॉन्सटा स्लो थाए. ये लिखला जे देख डिफरेंट टाइप रो सेल्स सब केमती इन्वॉल्व होची तमरा इनेट इम्यूनिटी रे अब तार यदि हम कॉमन देखिबा कॉमन ने के जीवो ना टी सेल्स एंड नेचुरल किलर टी सेल्स बुझियला एटी कोन लिखला ना इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी रो तार कॉमन सेल्स के जाउची ना टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स ई सब दीटा जगह सेल जे कि बोथ रे रहउची तमरा इनेट इम्यूनिटी रे एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी रे फंक्शन करची. तो नेक्स्ट देखिबा केमती फंक्शन करची. फास्ट देखिबा नेचुरल किलर सेल बता को हमें कौन कहूचे स्टूडेंट एनके सेल्स और नॉल सेल्स और एन लिम्फोसाइट्स. तो एनके सेल्स आर टाइप्स ऑफ लार्ज ग्रान्युलर लिम्फोसाइट्स. ग्रान्युलर लिम्फोसाइट्स मीन स्टूडेंट मु तुम कौन कही जे ग्रान्युल्स टाइप रो प्रेजेंट थिबो नुहे कि तो ग्रान्युल सेल्स प्रेजेंट थिबा को हमें कहूचे कौन ना ग्रान्युलर lymphocytes that constitute 10 to 15% of the total circulating lymphocytes. तो केते परसेंटेज रहइबो स्टूडेंट ना 10 रो 15% रहइबो कि ना नेचुरल किलर सेल्स. Then they lack the marker molecules characteristic of B and T cells. They are called natural killer cells because they possess innate ability to recognize and kill various cancer cells. So कहा को recognize करेगी ना cancer cells कहा को kill करिवो ना cancer cells, virus infected cells but not all. जे भाइरस इन्फेक्टेड सेल्स करो जे सबु जगह प्राय जो भाइरस तार केतरा स्पेसिफिक प्रेजेंट अच्छी एंड सर्टन इंट्रासेलुलर बैक्टेरिया विदाउट प्रीवियस स्टिमुलेशन है तांकर स्टिमुलेशन हवा पूर्व से ही फास्ट कौन करता है अटैक करना किल करता है किए ना तुम नेचुरल किलर सेल्स. क्लियर. देन देखिबा फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. तो फास्ट फंक्शन कौन आसीबो स्टूडेंट ना इट एक्ट एज फास्ट लाइन डिफेन्स है यहाँ क्वेश्चन आसीजिवो जे फास्ट लाइन डिफेन्स एगेंस्ट को सेल्स फास्ट काम करते ना किए आसीबो ना नेचुरल किलर सेल्स एगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर सेल्स कौन जो कैंसर सेल्स हमें कहूँ
देन सेकेंड आसीजिव दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है सी डिस्टिंग्विश करें जे किए इन्फेक्टेड सेल्स आ किए नॉन इन्फेक्टेड सेल्स एंड किल द इन्फेक्टेड सेल्स बाय परफोरिन मेडिएटेड साइटोलिसिस एंड बाय अपोप्टोसिस है ये दुईटा थ्रू रे से कौन करते ना ताको किल करते क्या ना इन्फेक्टेड सेल को देन आसो थर्ड फंक्शन इज the natural killer cells produce cytokines such as कौन cytokines सब प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट ना IFNS TNF अल्फा एंड ILS कौन इंटरल्यूकिन जहाँ आम कहे जो प्रोटीन बा फैक्टर्स कहे सी सब कौन ना यही cytokines सब प्रेजेंट थाए तो IFN गामा एक्टिवेट्स द मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस के करते ना IFN गामा व्हिच ट्रिगर्स फागोसाइटोसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ TH सेल से कौन करते को वेर काम करते ना फागोसाइटोसिस तो मुझे प्रीवियस क्लास कही जो व्हाट इज फागोसाइटोसिस गोटे सेल को जब गिरी देवा जो आम कहे कौन ना फागोसाइटोसिस नेचुरल किलर सेल्स इंड्यूस द मैचुरेशन ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स द मेजर coordinator of adaptive and innate immunity. Then आसो फिफ्थ फंक्शन ना किल ओन बॉडी सेल्स पोजेसिंग लो लेवल क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल जो लो लेवल MSC मॉलिक्यूल स्टूडेंट सी भी कौन करे निज ओन बॉडी को भी सी कौन करे ना किल भी कर दिए है ओन बॉडी को कौन करते माने किल भी कर दे थाए देन देखिबा द रिकॉग्निशन ऑफ टारगेट सेल्स बाय NK सेल्स में नेचुरल किलर सेल्स ना typically immune cells detect MSC presented on the infected cell surface triggering lysis or apoptosis तो फास्ट कौन करे जो इम्यून सेल्स टा डिटेक्ट करे जे तार MSC टा केते कौन अच्छी देन इन्फेक्टेड सेल करी सरफेस एंड लाइसिस माने कौन कटिंग करिया कौन करे भांगी देवा तो कौन जोटा देन NK cells are unique however as they have the ability to recognize the stress cells in the absence of antibodies and MHC से कौन करते हैं ना antibodies absence रे ही functioning करता है and allowing for much faster immune reaction से fast much मतलब fast पूरा reaction देखे थे immune reaction बा response जोटा हमें स्टूडेंट कहूँ natural killer cell express specific surface receptor help to recognize their target cells सब कौन था ना express CD16 receptors and specific FC region and IgG1, IgG3 in the human. Binding in NK cells via CD16 IgG interaction leads to the release NK toxic granules and killing the target cells. टॉक्सिक बाहर करते हैं जोटा कि टारगेट सेल को कौन करते हैं ना किल कर देता है आज दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ बाउंड एंटीबॉडी ये जो कहाँ पर डिपेंड करछि ना तमरा एंटीबॉडी पर डिपेंड करछि ना द प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी ADCC जहाँ को हमें कहूँ स्टूडेंट देन आसो CD2 रिसेप्टर ऑफ IL2 रिसेप्टर्स सरीगला तमरा नेचुरल किलर सेल्स देन देखिबा macrophages. The macrophages but the dendritic cells and monocytes are members of the mononuclear phagocytic system. So के रहिले ना macrophages रहिला dendritic cells रहिला then monocytes ये तीनटा जगह कोथे जाउछन स्टूडेंट तमरा mononuclear phagocytic system रे and exhibit multiple functions during immune response. तो ताकर जो functions टा स्टूडेंट थाए multiple type रा and immune response रे then macrophages are phagocytic granulocytes derived from circulating monocytes. तो ये कौन है ये macrophages टा कौन रहिला ना phagocytic रहिला but ए granular से granules absent रहिबो then देखिबा types of macrophages. Now there are two types of macrophages found, that is tissue resident macrophages and another is wandering macrophages चला then देखिबा tissue resident macrophages student they are stationary or fixed and immobile macrophages. After 8 to 10 hours of circulation monocytes leave the bloodstream then migrate into the tissues and transformed into resident macrophages. Kieti korchi na monocytes they are long lived cells and may survive for months. Now macrophages are differently named according to tissues where they live and serve
different functions they are देखिए different functions कौन रोचे स्टूडेंट ना डस्ट सेल्स और ताको मैं कहूँ alveolar macrophages so macrophages in lungs alveoli तो आम जानी alveoli आमर कोड थे ना lungs रे थे देन आसीबो कफर सेल्स ना macrophages in liver जो सेल था थाए देन आसीबो intestinal macrophages na in the gut then आसीबो microglial cells in nervous tissue of CNS central nervous system जोटा आम स्टूडेंट कहूचे then Langerhans cells na found in skin and helps in antigen presentation then आसीबो histiocytes in connective tissues then आसीबो mesangial cells in glomeruli of kidney देखो डिफरेंट टाइप रो हमर किडनी पाई लिवर पाई गट पाई सीएनएस पाई तो डिफरेंट टाइप रो सेल्स प्रेजेंट रोज स्टूडेंट देन आसीबो ऑस्टियोक्लास्ट ऑब्वियसली बोन दे फॉर्म फ्यूजन ऑफ सेवरल मैक्रोफेजेस एंड हेल्प इन बोन डाइजेशन एंड remodeling then आसीबो wandering macrophages ना they are motile amboid macrophages that move throughout the tissue कहा जाता थ्रू टिश्यू थ्रू रे से मूवमेंट करता है स्टूडेंट देखिए ना when adequately stimulated macrophages may increase in size forming epithelial cells and several may fuse to multinuclear giant cells then देखिबा functions of macrophages first होची phagocytosis then second function is antigen processing and presentations then activation of B cells and T cells then आसे जो production and secretion of immune response modifiers तो first देखिबा phagocytosis तो phagocytosis रे केमती प्रोसेस रहउची ना activated macrophages and neutrophils internalize and kill the ingested microbes by process called कौन phagocytosis है फर्स्ट कौन देखले ना activated macrophages and neutrophils रहइबो एंड से कौन करिवो किल इंजेस्ट मन को इंजेस्ट करिवो माइक्रोब्स टाकू देन प्रोसेस ताक सेही प्रोसेस टाकू हमें कौन थे ना phagocytosis ना द प्रोसेस ऑफ phagocytosis इन्वॉल्व्स कौन कौन रहउची प्रोसेस ना फर्स्ट होची रिकॉग्निशन ऑफ बाइंडिंग फर्स्ट होची रिकॉग्नाइज बाइंडिंग पे रिकॉग्निशन करिवो देन इंजेक्ट कर ताकू भीतर को आनिबो देन फ्यूजन ऑफ लाइसोजोम्स एंड किलिंग तो कौन करिवो ना लाइसोजोम्स को कौन करिवो फ्यूज कर दबा पोस्ट डाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल सेल एच फोर फंक्शन द्वारा ही से phagocytosis स्टूडेंट करता है देन देखिबा द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स कंटेन सेवेरल रिसेप्टर्स है आ सब सरफेस में बहुत सारा रिसेप्टर्स द्वारा ना रिकॉग्नाइज द माइक्रोब जे कि कौन करिवो माने माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करिवो and trigger to phagocytosis which are TLRS C3 receptors for C3 complement FC receptor for binding FC component of antibody and cytokine receptors now the killing ingested microbes inside the phagolysosomes but digestive vacuoles जोटा कहूचे is mediated by following mechanisms so different mechanisms following follow करची फर्स्ट होची कौन ना इंडिसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस देन सेकेंड आसीजिवो कौन ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ताको हम कहूचे से थ्रू दुईटा फंक्शन थ्रू से phagocytosis करची देन देखिबा एंटीजन प्रोसेसिंग ऑफ प्रेजेंटेशन कौन रहिला ना एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस कैरी आउट प्रोसेसिंग एंड phagocytosed protein antigens and present them on their surface कौन थे peptide MSC complexes ना this activate effector cells then third आसीजिवो ना activation of T and B cells the peptide MSC2 complexes displayed on macrophages activate the कौन TH cells then पढ़िबा neutrophils natural killer cell macrophages cell then पढ़िया neutrophils they constitute 60 to 70% of circulating leukocytes देखिए केते रहउची 60 to 70% तम neutrophils रहउची they are major type of PMNL with 2 to 5 lobed nucleus linked by fine threads of chromatins they are short lived with a half life of 6 to 7 hours in circulation कितने नहीं the 6 to 7 hours of circulation and 1 to 4 days in connective tissue कितने टाइम रही थे ना 1 to 4 days
Then देखिए functions of neutrophils. Neutrophils are macrophages and macrophages are phagocytic. Macrophages भी आउ कौन neutrophils भी सब गोटे कौन ना phagocytic function role करते. Then neutrophils move throughout the body by amoeboid movement and engulf the microbes and dead cells by phagocytosis. The killing of microbes mediated by reactive oxygen species and NADPH phagosome oxidase. Then ଆସିବ the granules, neutrophils and macrophages contain antimicrobial substance like କ'ଣ ଥାଏ ନା lactoferrins ହେଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ lactoferrins ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟା lysosomal cationic proteins ବି କୁହାଯାଏ. then ଦେଖିବା dendritic cells. The dendritic cells are the antigen presenting cells of the mammalian immune system and specialized to take up, process and present antigens on MSC molecules and active nerve T cells. Dendritic cells. Dendritic cells are the actively motile immune cells responsible for primary response. Now they get their name from the surface projections that resemble the dendrites and the neurons. देखिबा कौन सब को सेल्स सब रोची ना कौन लिखला एठी ना देयर आर बोन मैरो derived from cells, blood, lymphoid tissues and peripheral tissues, skin, mucosa, nose, lungs, stomach and intestine. ना there are three subsets of dendritic cells known. ना first होची Langerhans cells, then interdigitating cells, then आसीबो follicular cells. Then as found in Langerhans found in obviously skin epidermis where they act as sentinels. Then ଆସିବ interdigitating cells that represent mature progeny of dendritic cells in vivo and exhibiting strong lymphocyte stimulatory potential. Then ଆସିବ follicular dendritic cells. Now these are hematopoietic origin and don't express class 2 MSC molecule. They are present in the B cell follicles of spleen and lymph nodes. They hold intact antigens on their surface of which B cells can interact. Then ଆସିବ mast cells. The mast cells are large to 20 to 30 mm ରହିବ and non-motile cells found in connective tissues throughout the body and predominantly in skin, blood vessels and mucosa. Usually mature mast cells are lacking the circulation ହେଲା mature the mast cell से बहुत lack ଦେଖାଯାଏ. The mast cell like cytoplasm contains many secretory granules and polymorphous nucleus. They are two populations of mast cells. First is connective tissue mast cells, then ଆସିବ mucosal mast cells. The connective रे कौन रहुଛି ना located in skin and submucosa of intestine. Then ଆସିବ mucosal रे they found it mucosa, gut, lungs and conjunctiva. That they are present is T cell dependent. Then देखिए functions of mast cells. The TLRS on mast cells when bind the ligands and cause their activation. The activated mast cells release the stored contents granules such as histamine, the neutral protease and kill the bacteria and inactive microbial toxins on eosinophilic substance anaphylaxis. Then ଆସିବ second function is on activation mast cells synthesize and secrete substance that are not stored in the cell such as lipid mediators like prostaglandins, leukorines and platelet activating factors. ये सब cells present ଥାଏ. The mast cells express surface receptor and IgE produced by plasma cells. Then देखिबा basophils. The basophils constitute less than 1% leukocytes. केते ଥାଏ less than ଥାଏ 1%. They belong to PMNL. Their functions is like mast cells of connective tissues but have different ultrastructure appearance and originate from the different stem cells in the bone marrow. Then देखिबा eosinophils. बा ताको आमे कोन कहिथाउ acidophils. Eosinophils are the granulocytes that constitute 2 to 4% of leukocytes in circulation. Then functions देखिबा they can engulf
immune complexes and modulate inflammation by inactivating leukotrienes and histamines. The granules eosinophils contains protein called major basic protein which seems function killing the helminth worm. କାହାକୁ କରିଥାଏ ନା ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଲ୍ କରିଦେଇଥାଏ। କୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ IgG କ'ଣ ରଖିଥାଏ ତା କୋଟେଡ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ G। ପଢ଼େଇବି ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ପଢ଼େଇବି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି କେତେ ଟାଇପ୍ର। ଦ MVP also known to activate neutrophils and platelets and induces histamine release the mast cells. Their surface contains Fc receptors and mediated ADCC antibody and dependent cellular cytotoxicity. Then देखिबा platelets. Platelets are the non-nucleated fragments of megakaryocyte cells of bone marrow. Normal lifespan is कहते हैं ना 7 to 12 days, average 10 days. The function देखिए ना after blood vessel injury, platelets show adherence, aggregation and secretion. They release serotonin and noradrenaline which are vasoconstrictor substances which are necessary for hemostasis में हेल्प करता है. They also secrete histamine which contributes the inflammatory response and immediate hypersensitivity. Then platelet aggregation and degranulation is mediated by platelet activating factors secreted by basophils and mast cells following their activation with complements and allergens and immune complexes. Then ଆସିବ molecular barriers. এটা সରିଲା କ'ଣ ସେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିଲେ ନା କି ସେଲୁଲାର ବାରିୟର୍ସ ବି ତ କହିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ. ଦେନ୍ ଦେଖିବା molecular barriers of molecules involved in innate immunity. ତ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା proteins and pentraxins collection ficolins natural antibodies. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା opsonins. A soluble effector molecule that promotes phagocytosis by binding to a microbe or cells called କ'ଣ opsonins. ନା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଆଉ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥାଏ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ୍. ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ଫର୍ ଇଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା opsonin molecules. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ antibodies, secretive proteins, mannose binding lectins, complement molecules like C3b, C4b ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ସେ କ'ଣ ରଖିଥାଏ moleculesକୁ. Then ଆସିବ opsonin binds to the negative charges. The target cell boosts the kinetics, phagocytosis and different opsonins perform the different functions. Then देखिबा complement proteins. Now complement proteins are soluble plasma proteins that circulate in the blood and extracellular of the vertebrates. Then complement activation involve three pathways: classical pathway, lectin pathway and alternative pathway. All the pathway converts the production of C3 convertase. कौन production करे ना C3 convertase. then ଆସିଯିବ functions of complement proteins. the function कौन रहुଛି ना the MAC or C5b mediate cell lysis, C3b and C4b IC3b opsonization of particular antigens, then viral neutralization, then C3 mediate solubilization and clearance of immune complexes. Then देखिबा natural antibodies. Natural antibodies are antibodies of IgM type present in circulation of normal human and other mammals prior to infections. The contrast with immune antibodies which are produced by activated B cells in humoral immune response, and natural antibodies have limited number of specific are produced by B cells. Then ଆସିବ pentraxins. Pentraxins କ'ଣ ରହୁଛି ନା it is a family plasma proteins characterized by pentameric structure and calcium dependent binding their ligands. ହେଲା pentameric ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ନା pentraxins ବି କହୁଛେ. they are secreted କ'ଣ secreted by cells of କ'ଣ interleukin 6, interleukin 1 secreted from the activated phagocytes act upon them. The important examples are secretive proteins and serum amyloid protein and long pentraxin PTX3 ताकू भी हमें कहता. Now the name of CRP protein derived from the ability of bind capsules of pneumococcal bacteria.
Normally, plasma CRP concentration is low, but during infection, its concentration can increase up to 1000 fold ରହିଯିବ। Then ଆସିବ collectants। Now, these are trimeric and hexameric plasma proteins serve as effector molecules of innate immunity। There କ'ଣ ରହୁଛି function? It is soluble pattern recognition of molecule bind to the microbial cell walls and polysaccharide and the surfactant proteins present in the lungs and alveoli prevent the collapsing as well as functions of opsonions and enhance the phagocytosis of microbes by macrophages। Then देखिबा Ficolins molecules। They are plasma proteins which derive their names from fibrinogen। कोठ आछि ना fibrinogen or collagen because they have fibrinogen like carbohydrate domain connected to a collagen like domain। Their function is very similar to the MBL. Then lysozyme. Now it is a microbial enzyme that destroys bacterial cell wall. It is found in high concentration in the most tissue fluid except CSF. Then देखिबा important questions of this innate immunity 2। Now first question आसीଯିବ student describe the various cellular components जहाँ जहाँ भी सब cellular components innate immunity। then आसीଯିବ various effector molecules हम जहाँ discuss कले सेटा को लिखिପାରିବ। then पढ़िपारे write short notes on a natural killer cell, neutrophils, mast cells, natural antibodies, macrophages, dendritic cells, opsonins and pentraxins and collection of ficolins। तो स्टूडेंट एथिरे कौन देखुचे आम फास्ट पढ़ी आसली तो सेल्स पढ़िले सब से नेचुरल किलर सेल्स केमती फागोसाइटोसिस करछि केमती सेल को एंटर करछि आ को को सब रिसेप्टर सब लागुछि ए सब रिसेप्टर नेम मान रखिबो आ तार फंक्शन लिखिबो। तो आदर किछि तो नाही सबुथरा फंक्शन से सेम टाइप रो रहि जाउछि जे ये गोटे को सेल ये कौन अच्छी केते केते लिकोसाइट प्रेजेंट अच्छी आ तार फंक्शन कौन आ को रिसेप्टर ता साइड रे लागुछि। क्लियर? तो जहाँ भी डाउट रोचे तुम मत टेलीग्राम आप रे क्लीयरली पचारि पारिबो। देन मु तुम डाउट क्लियर करबा पई बहुत चेष्टा भी तो करी ट्राई भी करी। थैंक यू।